Dear students, now I am to start in Unit 3 in accounting. The chapter is the partnership. This chapter contains past adjustment, admission of partner, retirement of partner. But partnership is one type of a business. Before discussing in partnership, at first we have to know what is business. Now, business, the word business means any activities relating to purchase and sale of goods with a view to earn profit or to make profit is called business. Thus, partnership is a one type of business. In earliest, the first form of a business was a sole proprietorship or a sole trading business. In sole trading business, only one person starts business. He is the owner. He is the owner. He is a risk taker, and he of his own efforts he deals business. If any profit or any loss arises, he bears. If profit makes, he enjoys. If he suffers loss in his business, he also suffers. So then the partnership is the second stage of a business. The word partnership, जो partnership कथा आम डिस्कसन करुचे पार्टनरशिप कहले कौन बुझा ना partnership any member in business and they have if two to more persons have relation and start business, every member in such business is called partner. Ship means the relationship among the partners is called partnership business. So partnership is one type of business. Minimum two persons is required. So a partnership business contains two to more persons. So in a partnership business, the word partnership, ship means the relationship among the partners. So every partner in partnership business is called co-partner. So in a partnership business, at first we have to know what is the meaning of the business, but what is the meaning of a partnership. Now partnership is the relationship between two or more persons to carry on a business. It is called partnership business. So in a partnership business, it is after passing of a sole proprietorship business. In sole proprietorship business or sole trading business, only a sole person or only a person of his own efforts he can start business. His existence depends on of his own efforts. तेणु गोटे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रे जदि गोटे सोल प्रोप्राइटर बा सोल ट्रेडर से निजे जदि चाहिबो से बिजनेस को जते दिन पर्यंत कंटिन्यू करिया ता कंटिन्यू करिवो आफ्टर दैट तार बिजनेस जदि देखला लॉस करजे तार से निजे भांग करिवो किबा जदि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जदि सोल ट्रेडर से कोनसी कारण जो तार से सोल डेथ हे गला तेणु ताहार उत्तराधिकारी बा तार नोमिनी मत से बिजनेस करि परिवो किंतु पार्टनरशिप इज नॉट अ सच टाइप ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस. तेणु पार्टनरशिप बिजनेस गठन करने मिनिमम टू पर्सन दरकार. तेणु पार्टनरशिप बिजनेस हूँ दुई प्रकार. पार्टनरशिप बिजनेस वन इज बैंकिंग टाइप ऑफ बिजनेस, अनदर इज नॉन बैंकिंग टाइप ऑफ बिजनेस. सो इन बैंकिंग बिजनेस मिनिमम टू पर्सन्स एंड मैक्सिमम 10, बट इन नॉन बैंकिंग बिजनेस और जनरल बिजनेस मिनिमम टू पर्सन्स and a maximum exceeds to 20. एटा पार्टनरशिप बिजनेस रो टाइप्स. तापरती डेफिनेशन कथा चिंता करिबा जे पार्टनरशिप बिजनेस रो डेफिनेशन कहले हम कोन बुझिबा जे पार्टनरशिप प्रथम बिजनेस जो स्टार्ट करा हेतला इन 1932 पार्टनरशिप बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस वाज स्टार्टेड. Before that business चली किंतु in
1932 बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर्मेशन हला एवं से फॉर्मेशन अनुसार पार्टनरशिप केते गुड रूल और रेगुलेशन गुडी को अडॉप्ट करा हला एवं सेही अनुसार मधुर पार्टनर माने बिजनेस गुडी को आरंभ कले। तेनु प्रथमे इन 1932 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट defines but it modifies in 2015. The definition of partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all, any of them acting for all. एटा होची पार्टनरशिप बिजनेस रो डेफिनेशन एवं एई डेफिनेशन अनुसार पार्टनरशिप बिजनेस कमेंसमेंट में बा बिजनेस चले। तेनु कथाटा होची जदि पार्टनरशिप बिजनेस कथा में कहिबा ताले जो डेफिनेशन कथा में चिंता करले ताले से डेफिनेशन मध्ये सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पार्टनरशिप बिजनेस रो तयारी परिबो। तेनु से कैरेक्टरिस्टिक्स गुड होची प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स होची टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स कहले कोन बुझिबे आमे तो प्रथम कहै जे गोटे बिजनेस स्टार्ट करिया पहिले बा गोटे पार्टनरशिप बिजनेस सेतल चलिबो मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस मैक्सिमम 20 अर्थात जो पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम exceeds to 10 but in case of a non banking business minimum 2 and maximum exceeds to 20 in partnership business, so that it is clear that two or more persons means if a partnership business or a partnership firm is started minimum 2 persons and a maximum up to 20 and within business chali paribo। तो एटाला the first characteristics of a partnership business। then go on agreement कहले कोन बुझिबा ना when two or more persons carry on a business agreement is more important and more valuable or irresistible things in formation of partnership business। केतो क्षेत्र मतो बिजनेस रो एग्रीमेंट मतो करंतिनी किंतु जदि एग्रीमेंट हेतिबो एग्रीमेंट इज एसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। एग्रीमेंट इज ए रिटन बट नॉट ओरल। एग्रीमेंट इज मेड बाय द पार्टनर्स। तेनु एग्रीमेंट पार्टनर माने तयारी करथांती। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स। तेनु ए रिटन डॉक्यूमेंट्स रे से माने जहा लिखिथिबे एग्रीमेंट रे जहा सब लेखा थिबो जो आर्टिकल्स गुड सब लिखिथिबे तार से एज पर देयर आर्टिकल्स they continue their business। the another the characteristics or features of features is agreement। then the utmost good faith means the utmost good faith is the another characteristics or features of partnership firm। तेम जेतले पार्टनरशिप बिजनेस चले सेतले पार्टनर मान मध्यरे गोटे सुसंपर्क बा रिलेशनशिप सबले सुदृढ़ रहबा दरकार अछि। तेणु कई क्या प्रति गोटे रबरी काम करें कई क्या प्रति निजर सिक्रेसी जिन लुचि रखिपारे कारण पार्टनरशिप बिजनेस इज ए कॉमन बिजनेस एंड इट कैरीज टू और मोर पर्सन्स। तेणु जदि से भितर जदि गुड फेथ न आस पार जदि से भितर गोटे डिस्प्यूट रहा बिजनेस बेसी दिन चली पार ना। द एक्जिस्टेंस बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। सो दैट utmost good faith is the another important of in partnership business or features of a partnership firm। then the another features is the existence of business। existence of business कहले हम कोन बुझा बिजनेस रो स्थिति बिजनेस केमि चलिबो बिजनेस केते दिन पर्यंत चलिबो। तेणु सेटा हो सबठार गोटे इंपोर्टेंट कथा। तेणु गोटे कथा होची in sole trading business the existing business a sole trader knows a sole trader cannot tell about of his existence business। कारण गोटे सोल ट्रेडिंग बिजनेस रे जदि बिजनेस तो भलो कंटिन्यू कला बा बिजनेस भलो चलला त से कंटिन्यू करी चली परिबो किंतु पार्टनरशिप बिजनेस रे एक्जिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स। जदि से माने एग्रीमेंट लिखिथिबे they will carry on business for 2 years or 3 years or 5 years the existence of business will continue for such as per their views।
by as per their in agreement. Then the another features, the another important feature of a partnership business is sharing profit. Then sharing profit कहले कोन बुझिबा तेनु समस्तଙ୍କର गोटा लक्ष्य तो रही थाए जे बिजनेस करिबा आतरु आमे लाभ पाइबा कारण बिजनेस रो मूल लक्ष्य होछि केमिति आमे लाभ पाइबा दर लक्ष्य तेनु सेथि पई गोटे बिजनेस जेतले तयारी करा जाय थाए प्रॉफिट रो शेयरिंग ता सबुटा इंपोर्टेंट कथा तेनु ए जो शेयरिंग प्रॉफिट को जो कथा कहूचे ए शेयरिंग प्रॉफिट एग्रीमेंट अनुसार जा लिखा जाइतो ता हो तेनु कथाटा होची जदि इफ प्रॉफिट द शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट रिटन इन एग्रीमेंट जदि प्रॉफिट रो शेयरिंग ता जदि एग्रीमेंट लिखा जायनी तार सबुटारो गुटे कथा होची ना से प्रॉफिट ता तेनु जो पार्टनर जेते कैपिटल कंट्रीब्यूशन करथिबो तेनु से अनुसार पार्टनर माने प्रॉफिट लाभ बा नहीं परिबे नाही तेनु हमरो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहूची इफ शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट मेंशन इन एग्रीमेंट तेनु पार्टनर माने जो अनुपात से माने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करिथिबे से अनुपात से माने प्रॉफिट नहीं परिबे नाही द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वली बट इन एग्रीमेंट if in agreement sharing profit is written the sharing profit is written in agreement जदि sharing profit ता जदि agreement लिखा अछि तार से profit मध्य distribution बा profit is distributed in three basic factors profit को तीन भाग विभक्त कराई छी जदि agreement profit अछि तार से तीन profit होछ कोन ने गोडला simple capital ratio प्रथमटा होछि simple capital ratio फास्ट होची सिंपल कैपिटल रेशियो सेकंड होची कंटिन्यू ऑफ पार्टनर इन बिजनेस थर्ड होची प्रॉफिट शेयरिंग जे as per the partners views प्रथम होती सिंपल कैपिटल रेशियो जदि एग्रीमेंट लिखाई थो त जो पार्टनर जो अनुपात रे बिजनेस को कैपिटल सब्सक्राइब करछि बा बिजनेस को कैपिटल कंट्रीब्यूशन करछि तले एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन द प्रॉफिट एट द एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो सच रेशियो इज कॉल्ड सिंपल कैपिटल रेशियो देन जे कंटिन्यू ऑफ पार्टनर तेनु को पार्टनर को समय आसी सपोज गोटे पार्टनर वर्षे कंटिन्यू करछि तापर जे आउटे पार्टनर आसी बिजनेस को आसी तेनु बिजनेस को जेबे आसीला सेबे ठानु से वर्ष शेष पर्यंत तार हिसाब करे जो तार कैपिटल रो कंट्रीब्यूशन बा कंट्रीब्यूशन देखा जीवो केते बिजनेस रे तार बिजनेस रे तार कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेची एवं से अनुपात रे प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करा जीवो तापर केला एज पर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द व्यूज ऑफ पार्टनर तो पार्टनर मान जदि से माने जो अनुपात चिंता करथिबे जे भविष्य रे जो प्रॉफिट हबो तार प्रॉफिट को हम ए रेशियो रे बांटी नबा तार से रेशियो मध्ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर परिबे एटा होची जे शेयरिंग प्रॉफिट तार बेसरा कैरिड ऑन बाय ऑल द लास्ट फीचर्स ऑफ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल काई ना हम डेफिनेशन पाइचे जे गुडी पार्टनरशिप बिजनेस जदि करा जाइबो इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स जदि बिजनेस भीतर जो रिलेशनशिप रही ताले जदि चाहिए जड़े पार्टनर जदि चाहिए बिजनेस कंटिन्यू करि परिबो जदि सब पार्टनर इच्छा करिवे जे आमे बिजनेस को समस्त आमे समय दबा एवं बिजनेस को आमे कंटिन्यू करिबा ताले मत से माने द बिजनेस विल बी कैरिड ऑन बिजनेस का समस्त जरा मत चली परिबो एटा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन characteristics of a partnership business. Then the another important factor is partnership deed. ताले partnership deed कहले कोन बुझिबा ना partnership deed is a written document. It is not but it is
it contains some rules and regulation of partners and এই পার্টনরশিপ ডিড কথা যে আমি কହୁଛे এই পার্টনরশিপ ডিড রে सब रूल और रेगुलेशन गुड़िक रही थाए এবং যেতলে पार्टनरशिप बिजनेस रो फीचर्स देखिबा त पार्टनरशिप डीड रु हमें सब तथ्य पाई परबा वी कैन गेट ऑल डाटा इन पार्टनरशिप डीड द पार्टनरशिप डीड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल थिंग्स इन पार्टनरशिप बिजनेस तेनु पार्टनरशिप डीड जेतले तयारी करा जाय थाए तेनु पार्टनरशिप डीड रे सब कोन कोन सब क्लॉज सब गुड़िक रही थाए तार सेही क्लॉज गुड़िक होची प्रथम होची नेम एंड एड्रेस ऑफ द फार्म तार बिजनेस जेतले तयारी हुए ताले से बिजनेस रो प्रथमे नाटा दबा दरकार अछि तेनु आमे जदि आमे अकाउंटिंग केस कथा हम डिस्कशन करिचे जदि पार्टनरशिप कथा कहउचे ताले पार्टनरशिप जे वन टाइप ऑफ रियल अकाउंट बट जदि पार्टनरशिप रो ना देबा कोंडा एनको पार्टनरशिप बिजनेस ताले सेटा हो जिवो गुटे पर्सनल अकाउंट हिजो तेनु गुटे पार्टनरशिप बिजनेस तयारी करे पहले पार्टनरशिप रो नाटा होची बेसी इंपोर्टेंट कथा तेनु पार्टनरशिप डीडी पार्टनरशिप बिजनेस रो ना दवा दरकार अछि एवं तार एड्रेस और लोकेशन ता प्रथम होची इंपोर्टेंट कथा तापर से नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स तन से बिजनेस रे को पार्टनर माने नॉमिनेट हेचंदी बा को पार्टनर माने जोगो देचंदी को पार्टनर माने इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करिसंदी ताल सेही पार्टनर मान को नेम और एड्रेस रहिबा दरकार अछि वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर इन पार्टनरशिप डीडी नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स देन नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस ताला को टाइप रो बिजनेस आमे जो पार्टनरशिप बिजनेस तयारी करछे ताले से पार्टनरशिप बिजनेस ता अछि को प्रकार को धरणर बिजनेस अछि को प्रकार बिजनेस टी मतलब कंटिन्यू करबो तेनु सेटा मतलब पार्टनरशिप जोना पड़ जिवो तापर देसला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तार प्रॉफिट को रेशियो से माने बांटी नेबे जे सिंपल कैपिटल रेशियो रे नेबे ना कंपाउंड बा कंटिन्यू हबो पार्टनर्स बा पार्टनर को से माने जो आसी जदी सेही अनुसार प्रॉफिट को शेयरिंग से बांटी नेबे किबा एज पर द प्रॉफिट्स व्यूज ऑफ पार्टनर्स पार्टनर माने से मान जो व्यूज दे दिबे से व्यू अनुसार प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करिवे तेनु सेटा होची एई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोटा एई पार्टनरशिप डिटेल बंध लिखा जाय थाए ताउ कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैपिटल गोटे पार्टनरशिप बिजनेस तयार करिया पहले तेनु गोटा बाध्य दैट इज नो जे restriction a partner should give or give capital towards the business तो गोटे पार्टनरशिप केते परिमाणर कैपिटल तो सेमती किसी रेस्ट्रिक्शन नाही तेनु पार्टनरशिप बिजनेस रे गोटे पार्टनर तांकर शक्ति अनुसार से माने बिजनेस जतले बिजनेस करचंदी से बिजनेस देई परिबे कैपिटल कंट्रीब्यूशन करि परिबे एवं सपोज आमे कहबा ए बी सी डी हो जे तीन जन पार्टनर गोटे पार्टनरशिप फार्म तयारी करचंदी तेनु ये इन्वेस्ट 20000 बी इन्वेस्ट 60000 एंड सी इन्वेस्ट 10000 तार मतलब बिजनेस कंटिन्यू करबो तेनु कथा रहउची गोटे पार्टनर मान को नेम एंड एड्रेस होइजी एवं से पार्टनर केते कैपिटल कंट्रीब्यूशन करछि मतलब सेटा मतलब रहिबा दरकार अछि इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन पार्टनरशिप डीड तापर केसला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एवं मध्य पार्टनर माने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करचंती टुवर्ड्स द बिजनेस तले से माने से कैपिटल ऊपर केते इंटरेस्ट नेबे से माने से कैपिटल ऊपर केते इंटरेस्ट नेबे सेटा मध्य पार्टनरशिप डीड रु जणा पड़ि थाए तेनु एई कथाटा मोर मन पड़ि जाउची जदी एग्रीमेंट नाही इफ देयर इज इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तले इफ a partner invests some of capital he will not get any interest of his capital contribution तेणु जदि आमर पार्टनरशिप डीड नाही कि एग्रीमेंट रे पार्टनर माने कैपिटल कंट्रीब्यूट एग्रीमेंट हेनी तेणु गोटे पार्टनर जदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करि थाए किबा सब पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करि थांती से माने मतलब से माने कैपिटल ऊपर कोनोसी इंटरेस्ट पाई परिबे नाही इन एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट इन पार्टी और इन एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड तेनो एटा होची गोटे कथा तापर केसला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेनो कैपिटल कंट्रीब्यूशन अनुसार से माने को परसेंट रे इंटरेस्ट देबे सेटा मतलब पार्टनरशिप डीड रे लिखा जाय ताय तार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवं आउटा इंपोर्टेंट कथा होची सब पार्टनर मानकर की रिक्वायरमेंट थाए निजर किसी पैसा मध्य दरकार पड़ी थाए से मान मध्य चाहिए जदि एग्रीमेंट अछि से मान मध्य ए पार्टनरशिप डीड अनुसार मध्य से मान जदि
बिजनेस रू जदि किसी टंका तांकर नबार इच्छा थाए निजर पर्सनाल यूज पे पर्सनाल यूज पे जदि से माने बिजनेस रू किसी टंका नियंती ताहले ताको आमे ड्राइंग्स बोली कहबा एवं से ड्राइंग्स ऊपर केते इंटरेस्ट देबे सेटा मध्य ए पार्टनरशिप ड्यूटी रे मध्य लिखा जाय थाए। तेणु ड्राइंग्स कहले आमे बुझुचे कोन ना इफ एनी पार्टनर draws sum of amounts towards from the business of his own resources of his own निज पाई जदि गोटे पार्टनर किसी टंका उठाण करे ताले सेही टंका उठाण को आमे ड्राइंग्स बोली कहूचे एवं से ड्राइंग्स ऊपर केते इंटरेस्ट दबो सेटा मध्य पार्टनरशिप ड्यूटी रे मध्य लिखा अछि। तापर देखला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला सैलरी द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन पार्टनरशिप ड्यूटी ता अर्थ कहले कौन बुझा ना जदि गोटे एक्टिव पार्टनर अर्थात जो पार्टनर कंटिन्यू कर बिजनेस कंटिन्यू करुच्ची बिजनेस चलाऊँगी तेणु ताकू सैलरी फिक्स कर सी सैलरी पाई तापर आसला लोन फ्रॉम पार्टनर तेणु केतक अच्छा बिजनेस निजर पर्सनाल खर्च भी न नहीं बिजनेस लोन बाबद बिजनेस टंका उठे था तेणु से लोन फ्रॉम पार्टनर लोन से पार्टनरशिप ड्यूटी थाए आउ लोन टू पार्टनर एंड लोन फ्रॉम पार्टनर माने लोन पार्टनर को लोन दिया जाए बिजनेस पार्टनर को लोन दे थाए जदि तार किसी आवश्यकता पड़ता है एवं जदि बिजनेस क्राइसिस आसी थाए तेणु से क्षेत्र में पार्टनर को जे बिजनेस किसी लोन आकार पैसा दी थाए एवं से लोन आकार इंटरेस्ट केते लिखा जीवो सेटा इंटरेस्ट लोन बाबद लिखा जाए। तेणु एटी गोटे मोर प्रश्न आसुची जदि एग्रीमेंट हो जाथिबो इफ देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ इफ लोन जदि एग्रीमेंट नाही जदि इफ एनी पार्टनर्स गिव्स हिज कैपिटल टुवर्ड्स द बिजनेस क्राइसिस जदि बिजनेस रो कोन असुविधा समय जदि गोटे पार्टनर किसी पैसा इन्वेस्टमेंट कला बिजनेस किसी पैसा देला तार से क्षेत्र रे तार लोन बाबद लिखा जीवो एवं से बाबद रे से लोन एट द रेट ऑफ 6% पर annum से पाइबो इन एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट और इन एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड जदि पार्टनरशिप डीड हेइथबो ताले गोटे एब्सेंट थिबो तार से क्षेत्र रे गोटे पार्टनर जदि बिजनेस को किसी अमाउंट देछि तार से अमाउंट को लोन आकार ट्रीटमेंट करा जीवो एवं से लोन ऊपर 6% इंटरेस्ट मना कैलकुलेशन करा जीवो। तेणु एटा हला गोटे लोन फ्रॉम पार्टनर तापर आसला इंटरेस्ट लोन से लोन ऊपर केते इंटरेस्ट नबो सेटा पार्टनरशिप डीड रे लिखा जाइतिबो तापर डेट ऑफ कमेंसमेंट एवं को डेट रे बिजनेस स्टार्ट हेछि सेटा मध्ये पार्टनरशिप डीड रे मध्ये मिलिबो कमेंसमेंट अर्थ बिजनेस केबे आरंभ तेणु सीटा बिजनेस लिखा दरकार पार्टनरशिप डीड लिखा दरकार तापर आसला ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप केते वर्ष पर्यंत चलिबो सेटा पार्टनरशिप डीड रू वी कैन फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फंड तेणु यहाँ पार्टनरशिप डीड थाए तापर बैंक अकाउंट जो पार्टनरशिप बिजनेस तैयार कराई तेणु पार्टनरशिप बिजनेस गोटे बैंक अकाउंट आवश्यकता निश्चित भाव अच्छी तापर आसला गुडविल जदि गोटे पार्टनरशिप भल रेपुटेशन अच्छी जदि पार्टनरशिप भल चली तेणु से पार्टनरशिप बिजनेस हूँ गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस तेणु गुडविल कहले आम बुझा जे गुडविल इज अनडिफाइंड वर्ड तेणु या विभिन्न मत विभिन्न प्रकार कह सपोज आम कहे जदि आम तीन टा भल भल कॉलेज कथा कहवा तेणु सपोज आम कहे सालपुर कॉलेज कथा कहे रेभेन्सा कॉलेज कथा कहे तापर बीजेपी कॉलेज कथा कहे तेणु जदि तीन टा चांस तुमको दि जाए तुम को कॉलेज को प्रिफर कर फास्ट यू प्रिफर फास्ट बीजेपी देन रेभेन्सा देन सालेपुर सेमती जदि आम सालेपुर सहित अन्य कॉलेज कथा चिंता करवा से फॉर एग्जांपल सालेपुर सहित नेमाल चिंता करवा सालेपुर सहित बहुग्राम चिंता करवा तेणु फास्ट वी प्रिफर टू सालेपुर तो सालेपुर गुडविल अन्य कॉलेज गुडविल यथेष्ट बहुत भल तेणु यहाँ हूँ गुडविल तेणु यहाँ गुडविल इट इज ए इंटेंजिबल एसेट तेणु यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस रही थाए तापर आसला ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स तेणु बिजनेस चले तेणु पार्टनरशिप बिजनेस सब बड़ कथा हूँ ऑडिटिंग ना कहीं
ना ऑडिटिंग जदि न होई पारे त बिजनेस रो ट्रांजैक्शन बिजनेस रो क्राइसिस बा बिजनेस रो सिक्रेसी जो बिजनेस रो डिस्प्यूट गुडी को धरा पड़ी जदि ऑडिट करा जिवो त बिजनेस सब तथ्य गुडी को भलो भाबे के करा जिवो এবং बिजनेस रो केते प्रॉफिट करछि केते लॉस करछि सेटा मध्य ए पार्टनरशिप जे जदि ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स को अकाउंट्स गुडी को प्रॉपर्ली ऑडिट करा जिवो बा चेक करा जिवो ताले बिजनेस निश्चित भाबे क्लियर हो पाए तो एटा होछि पार्टनरशिप डीड तेणु पार्टनरशिप डीड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वाइटल फैक्टर इन पार्टनरशिप देन नेक्स्ट we are going to I am going to discuss profit and loss application account profit and loss appropriation account तेणु प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहले हम कोन बुझिबा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन पार्टनरशिप फार्म फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जे पार्टनरशिप फार्म रो सबथरो इंपोर्टेंट फैक्टर कारण जदि आमे फाइनल अकाउंट कथा चिंता करबा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तेणु ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस and the indirect expenses or indirect revenues are entered in the profit and loss account, but in partnership business profit and loss application account is maintained. It is just like of a trading and profit and loss account. So trading and profit and loss account is the most important factor in partnership firm. In trading and profit and loss account it has two sides, left hand side the debit, the right hand side is credit. In the left hand side all benefits of partners are taken, whereas in the right hand side all incomes of a business will be taken. For example, profit for the business is taken in the right side or in the credit side of a profit and loss application account. Interest on drawing will be taken in credit side of a profit and loss account, but all benefits, for example salary of a partner, interest on salary, interest on capital, commission, bonus, etc. of partners are taken in the debit side of a profit and loss account. So, in the next class, I am to start profit and loss application account and some problems regarding in partnership, how a partner will get profit. How a partner will get some profit, and I also discuss the sum of journal entries in partnership.